Hello everyone, welcome to my channel. And as we all know, I started this channel to train you all in AI, right? So let's begin with the lecture. So as we all know, AI stand for artificial intelligence, right? Artificial intelligence. First, we talk about the definition of AI. So AI means making machines or computers think and work like humans. Okay, what does it mean? So, for example, we are humans, right? We can think, we can learn from experience, we can make decisions. If we talk about example, like if I want to open a grocery shop, okay? So, to open the grocery shop, what I have to do first, I have to think, right? मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे ग्रोसरी शॉप में क्या क्या रखना पड़ेगा, क्या क्या आइटम्स मैं सेल करूँगा कस्टमर्स को, राइट? देन मुझे शॉप का रेंट क्या होना चाहिए, कितना रीजनेबल होना चाहिए, राइट? मैं पूरा थिंक करूँगा, सोचूंगा, बेस्ड ऑन दैट मैं शॉप को ओपन करूँगा, राइट? आफ्टर ओपनिंग द शॉप मैं डिसाइड करूँगा बेस्ड ऑन कस्टमर्स कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, राइट? सो विच मीन्स आई एम लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, राइट? आफ्टर दैट जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है मैं उसकी डिमांड को और बढ़ाऊंगा, मैं उसको और बाय करूंगा, देन सेल करूंगा। सो मैंने क्या किया, मैंने डिसीजंस लिया, राइट? सो व्हाट इज मीन? इट मीन्स वी ह्यूमंस आर थिंकिंग, वी ह्यूमंस कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, देन बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक डिसीजंस। सिमिलरली एआई का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सेम ह्यूमन बेस्ड पे ही है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे ही है। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक एआई क्या करता है? एआई यूजिंग डेटा एंड एल्गोरिदम्स लर्न करता है, प्रिडिक्शंस करता है, एंड बेस्ड ऑन दैट वो ह्यूमंस की तरह थिंक करके आपको डिसीजंस देता है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट डेटा, सो एवरीथिंग इन टुडेज वर्ल्ड इज डेटा, राइट? जो आप कंटेंट देख रहे हो स्क्रीन पर वो भी एक डेटा है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी एक तरीके से डेटा है, राइट? सो इन टुडेज वर्ल्ड एवरीथिंग इज डेटा। And if we talk about algorithm, so for now, just drop it. Okay. I will explain in future lectures like what is algorithm and all. Okay. Now I hope you understood what is AI. Let's begin with the simple example. Like आप YouTube पे अगर कोई वीडियो वॉच करते हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल आप अगर सॉन्ग यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑल, तो बेस्ड ऑन दैट कंटेंट आपको सिमिलर वीडियो सजेस्ट होती हैं। लाइक आपने एक वीडियो वॉच करी, सेम वीडियो उसी सेम कंटेंट की आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगी, राइट? तो ये कैसे वर्क कर रहा है? इट्स वर्किंग बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स एआई इज वर्किंग इन यूट्यूब एंड अदर सिस्टम्स ऑल्सो। सो बेस्ड ऑन योर बिहेवियर वो आपको रिकमेंड कर रहा है सेम वीडियोस, राइट? जो आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग। So that's how AI is working. Okay, if we talk about real life examples of AI, so as we all know, AI is everywhere around us, right? For example, first example is Siri and Alexa. Like अगर आप iPhone user हो, so आप Siri को बोलते हो लाइक कॉल करो या फिर यूट्यूब ओपन करो, सॉन्ग ओपन करो या फिर कॉल हर, कॉल हिम, लाइक दैट। ओके, सो दैट्स लाइक Siri is working एंड इसके पीछे एनएलपी वर्क करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ओके, सेकंड एग्जांपल फेस अनलॉक इन मोबाइल फोन्स। लाइक आपका जो पैटर्न होता है फेस का वो कैप्चर होता है, देन बेस्ड ऑन दैट आपका फ़ोन अनलॉक होता है। ओके, सो बिहाइंड द सीन्स एआई इज़ वर्किंग। थर्ड एग्जांपल इज़ गूगल मैप्स नेविगेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर कोई लोकेशन यूज़ करते हो, सर्च करते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर मैप मिलता है, एक नेविगेशन मिलता है उसके लिए। तो एआई इज़ वर्किंग जो आपको बेस्ट रूट फाइंड करके देता है। नेटफ्लिक्स मूवी रिकमेंडेशंस, राइट? लाइक अगर आप नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी वॉच करते हो तो बेस्ड ऑन दैट कंटेंट आपको सिमिलर मूवीज और कंटेंट मिलता है देखने के लिए, जो आप चूज कर सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, राइट? चैटबॉट्स लाइक चैट जीपीटी, ओके, all those things are AI. So this is all for this video. Okay, in next video we'll talk about why AI important for us and applications of AI and more real life examples of AI. So I hope you understood what is AI. Like in short, I explained all the things related to AI. So that's all for this video. If you love my video, then like, share and subscribe.
and I will see you in the next lecture.